Hello viewers, this is Miss Misty and I welcome you in my channel. So in few of my previous videos we have learnt about bonds, right? Some strong interactions like ionic and covalent bond we have come across, and we also learnt about van der Waals forces, right? We also learnt about hydrogen bonds, and in van der Waals forces we have learnt about four types, that are ion, dipole interaction, where uh, the first atom there will always be an ion, cation or anion. And dipole, we already know that what are dipoles. Dipoles are those forces that has plus points and negative points as well. And we have learnt about the second one, that is dipole interaction, right, where both of them are dipole, or you can say polar atoms are there. And third one, we have learnt about ion induced dipole, right, where an ion is, if it is in plus sign, then dipole, then another non-polar atom will become dipole by this atom, induced by this atom. Okay, now, and the last one from the previous video, you have learnt about dipole induced dipole interaction, right? Okay, so in today's video we'll learn about the fifth interaction or fifth secondary bond, that is instantaneous dipole and induced dipole interaction. Now first let's understand that how many atoms are there. How many atoms are there? First to know. So here we'll have two atoms. We'll have two atoms. Let's say this is the first atom, okay, and this is the second atom. Okay, let's change the color so that we can easily differ between them. Okay, so we have two atoms, as you can see. Now in these two atoms, let's suppose these atom here, suppose हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ओके, एंड एक और हाइड्रोजन एटम है here. Now you will see that ये दोनों ही डाइपोल्स नहीं हैं. What to understand in this term, that these can be any atom, okay. So now को ये समझना important है यहाँ पे कि ये दोनों ही डाइपोल्स नहीं हैं. See the name, instantaneous dipole and induced dipole. So here we have two words, दो key words है हमारे पास. instantaneous. What does instantaneous means? Instantaneous means कोई ऐसा एटम जिसमें किसी एक पॉइंट पे वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है. Let's explain this. Let me explain this. Okay, so suppose हमें पता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इफ़ सपोज मैं इसे H की तरह आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. अगर वो यहाँ पे है तो
इलेक्ट्रॉन में बिकॉज नेगेटिव होता है, सो हियर इट इज़ नेगेटिव, सो हियर इट इज़ पॉजिटिव, अंडरस्टूड। इन दिस केस अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इधर नेगेटिव हो जाता है और इधर उसके अपोजिट हो जाता है, सो दिस इज़ पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, अगर एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। इट विल बिहेव लाइक अ डाइपोल in some circumstances, at some point, if it is behaving like a dipole at some point, so it is instantaneous dipole. What is that? It is instantaneous in any circumstance or in any at any point अगर वो dipole की तरह behave करता है। So this became instantaneous dipole at this point, अंडरस्टूड। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे अगर नेगेटिव है यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, सो सी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इस प्लस साइन को बैलेंस करने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रोम करते हुए यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस दिस पॉजिटिव साइन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पॉजिटिव साइन को न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। सो क्या हुआ, इसमें जब डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब ये बना तो अदर जो एटम है उसने उस पर डाइपोल इंड्यूस कर दिया। हाउ, जब इलेक्ट्रॉन इसे न्यूट्रल करने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्लस एंड माइनस न्यूट्रल बनाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, विदाउट इलेक्ट्रॉन दैट इज़ पॉजिटिव। सो क्या हुआ, इस डाइपोल के कारण ये जो एटम है वो इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। ये डाइपोल बन गया है, ये डाइपोल था नहीं, इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया है, डेवलप हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दिस यू विल सी दैट प्लस एंड माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे अट्रैक्शन के कारण इन दोनों में क्या बन जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा अट्रैक्शन। सो दिस अट्रैक्शन is known as instantaneous dipole. You can see instantaneous dipole. Induced dipole, you can see induced dipole. So this interaction is known as instantaneous dipole, induced dipole interaction. Okay. Now see, this is also known as London Dispersion Force as well. This is also known as London Dispersion Force. And one more thing, this is very weak. Why this is so weak? Because ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही अपना प्लेस छोड़ेगा, जैसे ही अपना प्लेस से मूव करेगा तो ये इंटरेक्शन फिनिश हो जाएगा। Why? Because यहाँ पे चार्ज फिनिश हो जाएगा तो ये इंटरेक्शन भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है। Now this explains, sometimes हम कहते हैं ना कि हमने एक सिलेंडर में ऑक्सीजन सपोज हमने डाला हुआ है तो उनके बीच भी इंटरेक्शन है। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज दैट, इट इज़ इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced dipole interaction, or you can say it is a London force between oxygen and oxygen atom. means एक जो गैस होती है उसके एटम्स भी आपस में जो इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है, एक गैस के एटम्स भी आपस में इंटरेक्शन रखते हैं। हाउ, कैसे रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, यूजिंग लंडन फोर्स, लंडन डिस्पर्सन। रिमेंबर द नेम, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। That's it for today, and we'll meet in the next class with some few new topics. And till then, keep learning, keep growing. Bye bye.